हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीक्षा। एंड आज मैं आपको M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज जनवरी 2013 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पहला लेते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -5 आर इंटीजर्स, देन वैल्यू ऑफ a इंटू b ऑब्लिक c इज a. Next, which of the following is a valid identifier? C. Next, which of the following is a valid string constant? A. Next, how will you free the allocated memory? B. Next, if I is equals to 8 and j is equals to 5 are two integers, then the value of this is B. Next, how many times India will get printed? C. Next, a group of related data that shares a common name is B. Next, in C, if you pass an array as an argument to a function, what actually get passed? C. Next, what does fp point to in the program? B. Next, which of the following language is predecessor to C programming language? B. चलिए ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। पहला लेते हैं, size of short integer and long integer would vary from one platform to another. True. Next, a structure can contain similar or dissimilar elements. True. Next, name of functions in two different files linked together must be unique. True. Next, function that do not contain return statement do not return any value. True. Next, malloc function allocates memory from one heap and not from the stack. True. Next, every if statement must also include else. False. Next, the three declaration this, comma this and this are same. False. Next, malloc function returns a float pointer if memory is allocated for storing floats and a double pointer if memory is allocated for storing doubles. False. Next, if we have to execute the program with different set of inputs, we need to recompile the program each time. False. Next, compiler translates the of source code into object code before the program can be executed. True. चलिए मैचिंग में आ जाते हैं। पहला लेते हैं, used when we want to test more than one condition and make decision. B. Next, size of float and double in bytes. E. Next, a linked list is a H. Next, the switch statement is often used for A. Next, input or output function prototypes and macros are defined in C. Next, gives the current position in the file. K. Next, header file should be included to use malloc function. D. Next, a piece of information passed to a method. J. Next, by default, function returns F. Next, to concatenate two strings we use G. चलिए F5 में आ जाते हैं। पहला लेते हैं, dash breaks the normal sequential execution of the program. D.
नेक्स्ट, कैरेक्टर कांस्टेंट शुड बी इंक्लोज्ड बिटवीन, इसमें इसका आंसर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, इसका आंसर होगा सिंगल कोट्स। नेक्स्ट, द ऑपरेटर एंड इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश ऑपरेटर्स। जे। नेक्स्ट, pictorial representation of an algorithm is G. Next, a pointer contains dash until it is initialized. B. Next, if a function return type is declared as dash, it cannot return any value. E. Next, the dash operator can be used to access structure elements using a pointer to structure variable only. L. Next, the keyword used to transfer control from a function back to the calling function is I. Next, null micro is defined in dash file. A. Next, dash function is used to request memory space. C. सो फ्रेंड्स, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और भी इसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।